going to study about classification of psychopathology, DSM. It's a part of clinical psychology. So, what it is all about? So, actually, DSM is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. एक handbook है, which is used by healthcare professional in the United States and much of the world as authoritative guide. It's a main guide to diagnose mental disorders. So DSM contains, so DSM मतलब कि Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder में क्या है? It contains description, मतलब कि पूरा ये disorders का डिटेल है, उसका symptoms क्या होते हैं, that is also in this, plus the criteria for diagnosing the mental disorder, कि क्या criteria है जिसमें हम इन mental disorder को हम उसको उनको diagnose कर सकते हैं. So it is very important to understand ये कि हम किस तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है. So there are various ways of classification. I could now mention about the meaning and purpose of classification of psychopathology. It's a construction, or I would say it's a categorizing and assigning people to these categories on the basis of their attribute. कि अलग अलग attributes के basis पर, अलग अलग characteristics पर इन्हें जो है असाइन किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में. It refers to taxonomy or nomenclature which describe the names and label, एक name और label that make a particular disorder. That means एक नाम या फिर एक लेबल जो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर मिलाकर बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल बाइपोलर है या डिप्रेशन है, तो एक कैटेगरी बन गई. इट इज लेबलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर. तो एक पूरा एब्नॉर्मल बिहेवियर को एक हमने एक लेबल दे दिया कि ये जो बाइपोलर या डिप्रेशन के लोग हैं, एंजाइटी के लोग हैं, इनमें ये सारे इनमें एट्रीब्यूट्स होंगे, से कैटेगरी बन गई. सो सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिस्पॉन्ड्स बेटर टू वन थेरेपी देन अनदर और वन ड्रग देन अनदर. तो क्या है कि कुछ थेरेपी कुछ पे वर्क करती है, कुछ पे वर्क करती है, कोई ड्रग्स कुछ हेल्थ कुछ डिसऑर्डर्स पे वर्क करते हैं, कुछ दूसरे पे वर्क करते हैं. तो ये हेल्प करता है फिजिशियन को, एक जो एक्सपर्ट है उन्हें किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Further, let's know about the classification of psychopathology that fulfill 5 primary purposes: communication, control, comprehension, distinction, prognosis, and prediction. We'll study it further. We'll get to know what these are further. And जब हम इन सबको कर लेते हैं डिस्कस लाइक दिस अ पार्ट ऑफ एंटायर दिस DSM, फर्दर से क्या अप्रोचेज हैं, किस किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन होता है साइकोपैथोलॉजी का. पहला है कैटेगोरिकल अप्रोच. क्रेपलिन ने जो फर्स्ट साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई करा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रॉम अ बायोलॉजिकल और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि मेन जो था वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया. सेकंड था डायमेंशनल अप्रोच. That means our second strategy is a dimensional approach in which we note the variety of cognition, moods, behavior with which the patient presents and quantify them on scale. Example, anxiety. अगर देखा जाए कि एंजाइटी है तो वो स्केल में 1 से लेकर 10 तक. क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस डायमेंशन. सो व्हाट इज कि देखा जाए कि 1 से लेकर 10 तक कितना है, उनकी वेराइटी ऑफ कॉग्निशन को फाइंड आउट किया जाए, मूड कैसा है, बिहेवियर. सो एक तरह से ये कैसी है, ये एक डायमेंशनल अप्रोच है. नेक्स्ट इज प्रोटोटिपिकल अप्रोच, ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. नॉट ऑल बट इट आइडेंटिफाइज सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसऑर्डर, जिसमें कहा जाता है सारे नहीं, मतलब अगर 10 है तो 10 के 10 नहीं, बट हाँ उसमें से कुछ, फॉर एग्जाम्पल उसमें से 5 या 4 कुछ डिसऑर्डर्स को कंसिडर किया जाता है. So that means some essential characteristics of a disorder. As in depression, there are 5 important symptoms such as depressive mood all the day, weight loss, insomnia, fatigue, and feeling of worthlessness. For a person might have 4 or 5 of the characteristics of the depression, but not all 5 of them. Yet we still diagnose the person as depressed. तो मुझसे अगर सारे नहीं है, कुछ मैक्सिमम भी हैं, तभी हम उन्हें उसमें कंसिडर करते हैं उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर. Now, history of classification of psychopathology. The oldest
systematic classification Ayurveda, an Indian body of thought. The Greek philosopher Hippocrates classified mental illness into delirium, mania, paranoia, hysteria, melancholia, resulting from four basic temperaments. Now, Philip Pinel, based on उन्होंने क्या बताया कि इट इज बेस्ड ऑन फोर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, डिमेंशिया, मेनिया, मेलंकोलिया एंड आइडियोटिज्म. एमिल क्रेपलिन ने कहा कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड डिमेंशिया. यूगिन ब्लूरल मेंशन दैट साइकोपैथोलॉजिकल प्रोसेसेस. सो इन्होंने हिस्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे कहा गया. सो these are all those which we should be knowing. Development of ICD. In 1893, the first international list of causes of death was published. As a result, worldwide organized effort for classification of diseases was published. Example, publication of International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems by WHO in 1900. Only ICD-6 published with a separate section on mental disorder in 1949. ICD-8 published in 1972 with comprehensive glossary of mental disorder. So इस तरह से further उन्हें मेंशन किया गया कब कब कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो उन पब्लिश हुए. दैट मीन्स अगर वॉल्यूम 1 and 2 ऑफ ICD-9 ने particularly described diagnostic codes, while वॉल्यूम 3 explained procedure codes of mental and behavioral disorder. So ये सब हमें पता होने जरूरी है so that we can really understand this concept. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. ये क्या है? We can say it's a handbook जिसे सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है अलग अलग कैटेगरीज बनाकर, अभी जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं. और नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंटल disorder stimulates revolution in the effort of development of a classification system in the United States. We have already read in the beginning. ये सब चीजें जो है. Then in 7 categories of mental disorder were mentioned in 1880. Sensus, mania, melancholia, monomania, paresis, dementia, dipsomania, epilepsy. So these all are further on detail described in this, particularly this manual. Let's see it further. Now this is axis 1. सभी इसमें अलग अलग एक्सेस दिए हुए हैं. क्लिनिकल एक्सेस 1 में क्या होता है? क्लिनिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस दैट मे बी अ फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन. वो क्या क्या है? डिसऑर्डर यूजुअली first diagnosed in infancy, childhood and adolescence. Then delirium, dementia, amnestic and other cognitive disorder, mental disorder due to general medical condition. So these all schizophrenia, mood disorder, anxiety disorder वो यहाँ पर further discuss की इसमें एक्सेस 1 में आ जाते हैं. there are few more. अगर आप देखेंगे तो एक लंबी बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है. then there is a axis 2. एक्सेस 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेडनेस आ जाता है. ये सारा उसी में कवर्ड अप करा है. देन दैट इज 1, एक्सेस 1 एंड एक्सेस 2. नाउ लेट्स सी फर्दर उसमें क्या आता है. जिसमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक, सिजोइड, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, एंटी सोशल, ये सब इसमें आ जाता है. ओसीडी इसमें आ जाता है, बॉर्डर लाइन इसमें आ जाता है. सो दीज ऑल आर इन एक्सेस 2. तो दैट वुड हेल्प अस कि एक्सेस 1 में क्या है, एक्सेस 2 में क्या है. एक्सेस 3 आ जाता है, उसमें जनरल मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, उससे रिलेटेड सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. दैट इज इन एक्सेस 3. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज. फर्दर एक्सेस में क्या क्या आता है. एक्सेस 4 साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सब इसमें कवर अप हो जाती हैं. विद इज अ लॉन्ग लिस्ट, एक पूरा टेबल है इसका बना हुआ जो दैट वी कैन लर्न. इवन जॉब प्रमोशन सब ये सब तैयार होते हैं. एक्सेस 5, व्हाट इज एक्सेस 5? ग्लोबल असेसमेंट ऑफ रिलेटेड फंक्शनिंग. So relational functioning. So this is all covered up in axis 5.